As a student, I used to not like ratios a lot because it meant ratios were mugging up. Okay. And my approach towards ratios always care. I have to learn these formulas and then, put numbers and get the answer in the exam and all. But today, let's do something. And this is something that I also never got an opportunity to do. Let's discuss ratios without the headache of mugging up anything. We are not here discussing because of for an exam. We are discussing today ratios so that we can become better analysts. We can become better investors. And the relevance of formulas has actually majoritarily gone away today because you get the answers of all the ratios that you want on Screener and other platforms as well. So you will never be in a situation wherein you'll have to mug up the formula and find out the ratios. That won't be required in today's world. Analysis ही चाहिए. So मजा आएगा today. We'll have a fun discussion. The reason is we don't have the headache of memorizing or mugging up any formulas, right? We don't want to do that. Okay. Even if let's say you have forgotten a formula, na guys, तो क्या फर्क पड़ता है? In real life as well, because um we don't. So if you just chat GPT, tell me the formula, he'll tell you the formula. So the relevance of mugging up the formula is just going away. Here the discussion will only be on how do you analyze, what do you check, and for people who are actually doing CFA level 1 or who have already completed CFA level 1, उनको ज़्यादा मजा आएगा. They'll actually enjoy more because they have the basics. And now let's get into the details. What are we going to discuss? Ideally, I don't want to rush into things and I don't want the sessions to be more than 1.5 hours. So I thought I want to discuss ratios in detail. So decided we'll discuss this in 2 parts. So we'll discuss ratios today, few ratios today, and then few ratios next Saturday. I don't want to rush into everything in one session itself. So this is a discussion for both the parts together. There are 3 things that we are going to discuss. Why ratios matter, firstly. A primer, a basic into ratios क्यों important होता है. Second, a list of ratios. These are 5 groups of ratios ideally: efficiency, liquidity, solvency, profitability, valuation ratios. And the third is case studies. For people who are not doing CFA, not from commerce or finance background at all, you don't have to worry. We'll understand things from the very scratch. Okay. The only thing is we won't understand anything academic point of view. Okay. Important. We are only going to discuss things from a very practical standpoint. Actually, while we are analyzing companies, which ratio is actually of utmost importance. Okay. So let's start with the discussion of why ratios matter. Few basic points. Numbers alone mislead. Yes. Revenue, profit figures sound impressive, but without ratios, you can't judge the efficiency, probability, or risk. बहुत सही है. When you look at numbers, let's say whoever is new to financial statements, it'll be fun reading the balance sheet, the P&L and all. But these numbers, okay, alone can be very misleading. You won't understand. Revenue is growing. You might be happy, but is it getting converted into profit? Okay, so that you won't be able to gauge just by reading the financials. So some people tell me कि ratios important होते हैं क्या? I'm very good at reading financials. Still ratios are very important. You cannot avoid ratios at all. क्यों? Because वो actually समझाता है. If you just see the net profit margin, that one ratio will exactly tell you whether you are able to convert your revenue into profit or not. Yes, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि revenues increase and your expense also increase, so the profit is almost the same. You're doing business just to increase the profit, right? Profit earn करने बैठे यार, revenue बढ़ाने नहीं बैठे. Yes, so numbers alone mislead. Second, ratios are like X-ray. They reveal the health of the company's finances, liquidity, profitability at a glance. Ratio, अगर मैं simple words में बोलूँ तो एक shortcut है. It is a shortcut. इतने बड़े financial statements को पढ़ने से better, instead of reading such lengthy financials, you can exactly check. If I want to check profitability, so there are few ratios exactly. If I want to check the solvency, there are few ratios exactly. तो आपको पूरा फाइनेंशियल्स पढ़ने का जरूरत नहीं है. इंस्टेड यू कैन जस्ट गो थ्रू द रेशियोस, तो यू विल एग्जैक्टली नो दैट पिन पॉइंट ओवर दैट. मेक सेंस ऑल ऑफ यू? ओके, Yes, sir. ग्रेट. थर्ड इज सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्सिटी. यू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्सिटी मतलब hundreds of pages के financials, no. Okay, simple metrics में you'll be able to understand. Best point over here. Okay, one of the best points other is enable fair comparison. You want to compare your company with the last year's performance, with your competitors' performance, with the benchmark's performance. Everything is possible. Comparison is possible basically because of ratios. You can't compare to financials, right? It becomes very weird. You have to compare ratios. Helps in decision making, absolutely. And the most important one, why we are meeting today, to spot red flags early.
थोड़ा अगर रेशियोज अच्छे से समझा ना तो यू कैन अवॉइड वेरी बैड कंपनीज एंड विल डिस्कस अ लॉट ऑफ केसेस राइट नाउ यस टू अंडरस्टैंड हाउ रेशियोज कैन बी यूज्ड टू अवॉइड बैड कंपनीज. We'll start with working capital efficiency ratios. We are going to go extremely slow, extremely detailed. Yes. The only point is we need to understand everything. We need to apply this. As soon as we are done with today's session, you guys should be in the zone that I can pick up any financial and actually start understanding the ratios of that company. Yes, that is my intent. Let's start. Days of sales outstanding. We'll take one at a time. Days of sales outstanding. Okay. What is this? Debtor days क्या होता है? Debtor is someone, he is our customer who has not paid us money. For people who are new, debtor क्या होता है? Someone who is a customer of ours, जिनको we have sold some goods and he has yet to pay us money, so he is called a debtor. Now the formula is given, not required for us. Okay, अब हम concept समझते हैं. Okay, just focus on the first one, debtors. We are just discussing this. Meaning क्या होता है debtor days का? Average days customers take to pay. So if you are analyzing a company and you come to know the debtor, ओके आपको पता चलता है कि डेटर डेज कितना. ओके यू कम टू नो दैट द डेटर डेज इज लेट्स से 50. सो व्हाट डज इट मीन? मीनिंग क्या होता है? 50 है, डेटर डेज इज 50, मतलब ऑलमोस्ट 50 days it takes our customer to pay us money. 50 दिन में कस्टमर हमें पे करता है. Okay, it takes 50 days for a customer to pay us money. So ideally, from a very logical standpoint, this is lower the better. You want the customer to pay you money fast. जल्दी पैसा आएगा. You can use it somewhere else and do more production or something like that. Correct. So obviously this is lower the better. अभी थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझो गाइस, कॉन्टेक्स्ट समझो. B2B कंपनीज होता है ना, बिजनेस टू बिजनेस, उसमें इट इज 30 to 60, बट रिटेल कंपनीज विल बी वेरी नेग्लिजिबल. सर्विस सब्सक्रिप्शन कंपनीज वेरी नेग्लिजिबल. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अगर आप मैकडोनल्ड्स में जाओगे, मैकडोनल्ड्स में यू ऑर्डर्ड वन आलू टिक्की, ओके, एंड ही दैट गाय विल बी लाइक सर 60 rupees 70 rupees, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि आई पे यू आफ्टर 2 months. नो, देयर इज नो क्रेडिट इन मैकडोनल्ड्स. सो जनरली B2C कंपनीज, customer facing companies may the debtor days is very less, it is almost negligible. Okay, but B2B companies में ये problem है जहाँ पे your customer who is also another business will pay you after 1 month 2 months 3 months etc depending on the industry. तो एक clarity आया सबको कि this ratio cannot be compared across sectors. वो वैसा नहीं हो सकता. You have to compare this in the same industry, in the same sector. आप एक रिटेल कंपनी B2C कंपनी का डेटर डेज यू कैन नॉट कंपेयर विद B2B कंपनी का डेटर डेज. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई अगेन रिपीट, डेटर डेज क्या? हाउ मेनी डेज इट टेक्स अ कस्टमर टू पे अस मनी. Ideally you want this to be lower the better, but have apple to apple comparison. So what does it mean? You cannot compare a B2B company's debtor days with the B2C company's debtor days. अब similar companies का compare करो. Simple. So I'll just mark lower the better over here. Okay. When to use this? A lot of people forget कि इसका significance क्या है, relevance क्या है, क्यों हम use करते हैं ये ratio? To assess the collection efficiency, customer credit risk and realism of revenue recognition. Realism of revenue recognition, एक एक term यहाँ पे बहुत सोच के बनाया है मैंने. ठीक है, please focus. Realism of revenue recognition also important. When we'll be discussing case studies ना, we'll discuss few companies wherein like sometimes what happens is a lot of companies they are just booking fake sales, bogus revenue है ही नहीं उनके पास. ठीक है, तो क्या करते, दे जस्ट शो रेवेन्यू बट पैसा तो नहीं आ सकता. दे कैन शो फेक सेल्स, दे कांट शो फेक कैश, फेक मनी कमिंग इन द बैंक अकाउंट, सो क्रेडिट सेल्स दिखाता है. इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज द डेटर डेज कीप्स इंक्रीजिंग. सो वी डिस्कस दिस इन डिटेल एज वेल. तो दिस इज अ रेड फ्लैग कि अगर डेटर डेज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है मतलब कुछ तो गड़बड़, there is something wrong. Okay. Next, we need to understand is what are the insights and how to use this. What are the insights that track the trend versus the sales ka growth? Okay. Rising DSO with flat sales can flag collection issues. I think I need to explain this in a better way. Just a second. So guys, understand cases. Okay. Practically, if you come across these cases, case one is, guys, if the debtor days is increasing, but at the same time your sales is flat. क्या हो रहा? Understand. If the debtor days is increasing, but the sales is flat, क्या होगा इसमें? Sir, okay ना? See, the sales is flat. Revenue last year was let's say 100 crores. This year also it's 100, 102, 103 crores.
almost flat sales. But the number of debtor days, last year the customer was paying us within 40 days. This year the customer is paying us within 60-65 days. The debtor days is increasing, but the sales is still flatter. What does it mean? It means that you are not able to sell goods. So now, in order to lure more customers, you're just giving them a higher credit period. इट इज पॉसिबल कि बोगस रेवेन्यू, जरूरी नहीं है वही होगा, बट पॉसिबल है कि ऐसा कुछ गड़बड़ हो सकता है. सो दिस शुड रेज योर आईब्रोज, दिस शुड कॉशन यू के ब्रो देयर इज समथिंग फिशी इन द बिजनेस. अनदर red flag that you can keep in mind is if the debtor days थोड़ा layered है, yes, debtor days is high, guys, sales भी बढ़ रहा, they are also increasing sales, but your operating cash flow which appears in the cash flow statement, okay, is flat. अगर ये फ्लैट तो समझा क्या हो रहा है, डेटर डेज बढ़ रहा है, सेल्स फ्लैट है. सेकंड, डेटर डेज बढ़ रहा है, सेल्स इज आल्सो इंक्रीजिंग, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, you are selling more, okay, the customer paying you late, but your operating cash flow is still not increasing. मतलब क्या, you are just showing higher sales, but you're not getting cash. Ultimately cash चाहिए ना. Yes, so both of these are red flags. We can have numerous examples. We can have numerous examples over here discussing so many companies facing these two cases. Yes, so many companies facing these two cases. तो हमें ये याद रखना है कि इन केस अगर आपको ऐसा कोई कंपनी मिल जाए तो रुक जाओ. Yes, don't invest in that company in a very hurried fashion. सोचो शांति से. So these two are classic red flag cases. ये माइंड में रखना है आपको. Yes. So this is the line that we have understood right now. Track trend versus sales growth. Okay. Next point that we can discuss over here is break the DSO by customer cohort to spot risky accounts. Break DSO, okay, by customer cohort to spot risky accounts. Sir, ये क्या है यार? ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा हमने. We have never studied something like this in CF or anywhere. क्या है guys? DSO मतलब days of sales outstanding by customer cohort to spot risky accounts. Let's understand this, guys. बहुत crazy है. Some people in the chat box are saying, sir, let's take an example. Give me a minute. Let me cover this next point, and then we are surely taking an example. Okay. अच्छा, people want example. मेरे mind में एक example आ गया अभी. तो let me just tell you. ये जो case है ना, ये case. This case was found in a company called Mamaearth. Mamaearth, guys. Again, I'm taking name of companies, but it is just for educational purposes. Okay. Mamaearth. Have you heard about this company, Mamaearth? Everyone? Skincare products, face wash वगैरह बनाते हैं. Yes, sir. Yes. Yes. Now this company was accused of channel stuffing. For people who don't know what is channel stuffing, let me explain this quickly to you. Channel stuffing, exactly as the name suggests, you are stuffing the channel. मतलब if I am making skincare products, I am making a face wash, let's say. मैं face wash बनाने का company हूँ. Now I am actually selling these goods to a distributor. The distributor will sell to the shops, and those shops वाले people will sell it to me. That is the whole chain. Okay. The manufacturer, the distributor, he'll give you to the shopkeepers, and he'll sell to people like us. ये chain है, let's say, simplify कर दिया. Now this is Mamaearth. What they did is, now distributor, he will put an order. क्या you guys, distributor will call up Mamaearth and tell इतना मेरे को माल भेजो, send me these goods, this amount of goods, seeing कितना demand है shop में. But Mamaearth ने क्या किया? Mamaearth said कि listen, don't take just 1 month of goods, take 3, 4, 5 months के goods. So Mamaearth started stuffing a lot of goods to distributor. Mamaearth started stuffing a lot of goods to distributor. This is all accused. I am not saying this has happened. Okay, because ये prove नहीं हुआ है. But people say कि Mamaearth ने बहुत सारे goods stuff कर दिया. Okay, distributor को. Now what happened is Mamaearth started recording कि bro, we तो have done revenue. But पैसा आ रहा है. Distributor will keep it for 2 months, 3 months, 4 months. Then return it back because sale नहीं हो रहा. So वो तो next year आएगा. So essentially क्या हुआ guys over here? Did the revenue increase? Sorry. Did the revenue increase of the company? Yes, because Mamaearth is stuffing the channel, selling it to the distributor, recording revenue in their books. So revenue is recorded. Okay, these are not paying us money, so the debtor days will increase. Customer is paying us late. Okay, but if you check their cash flow statements, cash is not increasing. These guys are not paying. Do you understand what happened? Classic case. We should have been थोड़ा सा distant.
Is this clear, all of you? Yes? Yes, sir. अरे सर क्या स्टोरी स्टोरी वोरी क्या बता रहे हो आप? प्रैक्टिकली समझाओ, पक्का ऐसा हुआ? ओके, स्टोरी नहीं है, लेट्स लेट्स गो। गाइस क्या नाम है मामाअर्थ की कंपनी का? मैं भूल जाता हूँ। कॉमर्स। सॉरी? FSN ई कॉमर्स। सॉरी सर, वो तो नायका का है। नहीं नहीं नहीं, वो क्या है इसका? होनासा कंज्यूमर है। होनासा होनासा कंज्यूमर सर, होनासा ऐसा। कंज्यूमर। होनासा कंज्यूमर, हाँ ठीक है, चलो। देखो होनासा कंज्यूमर का अपन पीएनएल देखेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी, ठीक है। वी गो टू द क्वार्टरली रिपोर्ट्स। सी, व्हेन यू लुक एट द ओपीएम ना, यू गेट टू नो कि एवरेज ओपीएम क्या है। I am not saying anything. You guys will tell me what is the issue. Guys, tell me which quarter is a very weird quarter. Which is a quarter जहां पे कुछ weird हो गया, बहुत अलग है कुछ. Quickly tell me. सर दिसंबर, कौन सा? दिसंबर 2022। December 2022. No, नंबर 24। no. December 2022 is normal only. September 24. September 23। September 24. Guys, September 24 is the only year wherein your operating profit margin is actually negative. Operating profit margin is negative. See, you see, guys, उसके पहले, guys, before September 2024, every year the revenue is increasing, यार. Revenue बढ़ रहा है, 387, 355, 360, 426, 460, 451, 500. June 2024 में सीधा revenue 427, 544. So the revenue is increasing. But suddenly, September 2024 में क्या हो गया? Operating profit margin negative कैसे हो गया? वो स्क्रीनर पे नहीं पता चलता. See, what I'm doing is I'm clicking on the raw PDF. Can you see? ये रॉ पीडीएफ, ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट्स. अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स में गए एंड सी व्हाट इज वियर्ड ओवर हियर. व्हाट इज वियर्ड? अदर एक्सपेंसेस. गाइस देखो, अदर एक्सपेंसेस कितना? 2673 मिलियन, मिलियन में है तो 267 करोड़. परचेजेस पूरे साल में 170 करोड़ और 267 करोड़ का अदर एक्सपेंस. अदर एक्सपेंस क्या होगा? बट इन द ब्रैकेट व्हाट हैव द रिटर्न? गाइस व्हाट हैव द रिटर्न इन द ब्रैकेट? Refer note 9. रेफर नोट 9. तो कहां जाएंगे अभी अपन? Is that a return? नोट 9. Yes, return होगा. एक सेकंड. Refer note 9. Note 9 is on your screen. See, क्या लिखा है उन्होंने? You can read the whole thing. Or maybe just read the last point. Sales return of rupees 635 million has been provided for with resulting inventory right to return asset and provision for doubtful debt of 20 million. Simple. क्या हुआ? They started selling. Okay. Standard stuff हो गया. But then what? वो रिटर्न हुआ गुड सब, ठीक है. तो they had to provide for the return of. तो सेल्स रिटर्न आया इतना सारा, समझा? 63 करोड़ का सेल्स रिटर्न हुआ. आई होप यू गाइस अंडरस्टूड आई एम सेइंग. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Perfect. We are now getting into break the DSO by customer cohort to spot risky accounts. बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत अलग है एंड आई डोंट थिंक वी हैव डिस्कस्ड दिस इन सीएफए और एनीवेयर. आप समझो ध्यान से. Guys, break DSO by customer cohort. Understand this very carefully. Break DSO by customer cohort. Customer cohort मतलब क्या? See guys, we have to analyze कि उनका जो days of sales outstanding है वो कैसे आ रहा है. Now this is where smart analysts now understand a lot of things. See guys, if a company that you are analyzing is a B2G company. B2G company मतलब क्या? Anyone in the class, what is B2G? बिजनेस टू गवर्नमेंट। बिजनेस टू गवर्नमेंट। बिजनेस टू गवर्नमेंट. तो अभी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में आप पैसा मतलब इफ देयर इज अ कंपनी दैट इज गिविंग सर्विसेज टू गवर्नमेंट ना, इट इज मतलब ऐसा लोग बोलते हैं गवर्नमेंट से पैसा आने में बहुत टाइम लगता है. गवर्नमेंट डजंट पे प्रॉम्प्टली. प्राइवेट कंपनीज पे वेरी इमीडिएटली, बट गवर्नमेंट से पैसा आने में टाइम लगता है. सो देयर इज अ कंपनी दैट आई हैव बीन एनालाइजिंग कॉल्ड साइंसिस टेक. कंपनी क्या करता है ना, मैपिंग सर्विसेज देता, जियो स्पेशल मैपिंग सर्विसेज देता ये कंपनी साइंसिस टेक. रीड अबाउट दिस इंटरेस्टिंग कंपनी. अभी इसका डीएसओ स्टार्टेड इंक्रीजिंग, बट पैनिक करने का जरूरत नहीं था. इट इज स्टिल अ गुड कंपनी. वाई? बिकॉज अंडरस्टैंड ना, वो B2G धंधे में. तो B2G में काफी टाइम ऐसा होता है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से पैसा नहीं आता, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से पैसा अटक जाता है, कभी कभी लेट आता है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो कॉन्टेक्स्ट समझना इंपॉर्टेंट. यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ओवर हियर एज वेल. आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक फ्लैट नहीं रख सकते. यू कांट हैव अ ब्लैंकेट रूल फॉर एवरीवन. ओके, व्हाट आई
मीन टू से आपको डीएसओ को ब्रेक करना है. डीएसओ को ब्रेक करना है मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि न्यू वर्सेस ओल्ड कितना, एमएसएमई वर्सेस बिग कितना, प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट कितना, इंडिया वर्सेस फॉरेन कितना. आपको आइडिया आ जाएगा इससे बहुत सारी चीजों को. इंडिया वर्सेस फॉरेन कितना. Understood. So let's say your customers have to pay you 100 crores. Your debtors have to pay you 100 crores. How much is from a new customer? If it is from a new customer, तो पैसा आएगा नहीं आएगा. How much is from private? How much is from government? Government will pay you late. So if it's a government heavy company, तो उसको थोड़ा रिस्क ज्यादा ही है. Because government pays you late, there might be delays in the payment, etc. Foreign company से आ रहा है. So foreign companies, if it is, तो आपको एक letter of credit something ऐसा कुछ मिल जाता है. If you give that to the bank, आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा. So this is good. सो आपको ना आपके कस्टमर कोहॉर्ट को ब्रेक करके समझना है कि कहां से पैसा आने का पेंडिंग है ज्यादा. इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. And the last point, last insight that you have to gather is compare with allowance for doubtful debts and receivable aging. What do you have to compare? Allowance for doubtful debts and receivable aging. Tighten credit terms or incentive early payments if DSO creeps up. ऐसे टर्मिनोलॉजी समझना इंपॉर्टेंट है. सी व्हाट दे आर ट्राइंग टू से ओवर हियर इज, अंडरस्टैंड गाइस, you have to compare two things. Compare two things. You have to compare allowance for doubtful debts. Sir, ये क्या होता है? Majority accounting students would know what is this. Yes, but nevertheless, I'll try explaining it in simple words. Allowance for doubtful debts क्या होता है? Guys, see, every year you sell goods. Now there are few businesses wherein you don't get money upfront. The customer tends to pay you after 1 month, 2 months, 3 months, etc. Okay. Now what is allowance for doubtful debts? मतलब allowance means a provision. You create a provision for those debtors whom you feel, you know, they are not going to pay you money. This is not bad debts. This is the amount that you feel might turn into bad debts. तो उसका एक provision बना के रखते हो. I'll again repeat. Allowance for doubtful debts क्या होता है? Let's say this year we have done 100 crore का sales, out of which 40 crores is debtors. 100 crore sales हुआ, out of which currently still 40 crores yet to be received. 40 crores customer से पैसा लेने का बाकी है. This is the money left to be collected from the customer. Now I feel from the historical track record, I feel every year, okay, let's say 5% people don't pay me money. Let's say 5% people, 5% of my debtors don't pay me money. तो 5% of 40 कितना हो जाएगा guys? 2 crores. So 2 crores को मैं प्रोविजन बना के रखूंगा कि आई फील इतना पैसा तो आई शायद नहीं मिलेगा मुझे. Now every year companies create some allowance for doubtful debts. You have to compare this with receivable aging. Receivable aging क्या होता है समझो. This is something that you get in notes to accounts. Notes to accounts में ना इसका टेबल बन जाता है. एक टेबल बन जाता है इन द notes to accounts. मतलब क्या? Receivable aging क्या होता है? Let's say you have sold goods. You have sold goods to the customer. Okay. Now customer, let's say, had to pay you on 1st of January. 1st of January ड्यू डेट था, कस्टमर को आपको पैसा देना था. कस्टमर हैज नॉट पेड यू मनी. ओके, तो कितने दिन से कस्टमर हैज नॉट पेड यू मनी? इफ इट इज फ्रॉम 0 to 30 तो कितने लोग हैं? 30 to 60 कितने लोग हैं? You understood? Because every company has to, I'll again repeat, every company compulsorily has to provide the receivable aging report in their notes to accounts. This is something we don't study anywhere. I'll again repeat, every company has to provide its customer aging report, receivable aging report in the notes to accounts. तो ये क्या होता है सर? कस्टमर को जो दिन पैसा पे करना था उससे कितना डिले हो गया? लेट्स से 40 करोड़ का टोटल आई हैव टू रिसीव मनी फ्रॉम माय डेटर्स. उसमें से 30 करोड़ तो 0 to 30 डेज वाले ही है. ठीक है ना? मतलब ओनली लेट्स से 8 करोड़ इन 30 to 60 एंड 60 to 90 में ओनली 2 करोड़ है. Everyone understood what's happening over here? 40 crores have to receive from my customers. 30 crores तो 0 to 30 डीले वाले ही है, तो चलो वो आ जाएंगे. जितना टाइम पीरियड बढ़ता है, ओके, 90 प्लस वाला कोई है नहीं तो अच्छा है. 90 प्लस में तो हायर द नंबर ऑफ डेज, लोअर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू एबल टू कलेक्ट मनी फ्रॉम द कस्टमर. यस, तो ये इंसाइट लेना बहुत जरूरी है. सो इफ आई टेल यू गाइस, एंड दिस डिटेल्ड एनालिसिस हैपेंस only and
only if you spend some time. Okay, जैसे अगर मैं आपको बोल दूं there are two companies X Limited and Y Limited, there are two companies, both have a debtor, दोनों का debtors is let's say 80 crores. 80 crores का money they have to receive from the customer. Okay, but when you check the receivable aging 0 to 30 days, 30 to 60 days, 60 to 90 days and 90 plus. X Limited में क्या 75 crores over here, 5 crores over here, nothing over here. But Y Limited में 20 crores over here, 30 crores over here. You tell me both have to receive 80 crores. So from the financials you will feel both are same only ना, दोनों को 80 crores लेने का बाकी है. But do you think the actual situation is same in X and Y? Can I say this 80 crores is the same? No. Y Limited में okay, there are customers okay which have not paid since 90 days, more than 90 days से 20 crore रुपए अटक गया. तो इसका probability of recovering this is so big. ये आने ही नहीं वाला है. अगर कोई कस्टमर ने 3 महीने से पे नहीं किया आफ्टर द ड्यू डेट, मतलब जो दिन तक पे कर देना चाहिए, क्रेडिट पीरियड प्लस 90 डेज के ऊपर से दे हैव डिफॉल्टेड, दे हैव नॉट पेड मनी, तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कलेक्टेड इज वेरी लो. सो इवन दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यूल सी अरे डेटर्स इज 80 करोड़ दोनों में, डज नॉट मीन इट इज सेम. सो व्हेन यू हम जब सीएफए में अरे सर डेटर डेज ये डेज, दोनों का डेटर डेज विल बी ऑलमोस्ट, अगर रेवेन्यू डेटर्स इज सेम द डेटर डेज विल बी सेम, बट यू थिंक इट इज एक्चुअली सेम? नो. The gravity of the situation is very different in both of them. Yes, so in this case you need to create a more better provision. आपको provision for doubtful debts, allowance for doubtful debts ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे कम होना चाहिए. Yes, this is the exact point. You need to compare provision with the receivable aging report. ये compare करो. Y Limited में बहुत प्रॉब्लम है, so they need to create a huge provision because there are a lot of people who might not pay you money. बहुत बड़ा bad debt होने वाला. X Limited में इश्यू नहीं है. समझा एवरीवन? Guys, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. for people who follow me on LinkedIn, आपको पता होगा I did a post yesterday. मैंने ना, if you guys want to apply everything that you have studied in FSS CFL level 1, मैंने एक prompt बना दिया है. If you just use that prompt and put screener का link of any company that you want to just analyze, तो आपको पूरा एक रिपोर्ट बन के आ जाता है, फाइनेंशियल हेल्थ रिपोर्ट. We had discussed this one of our sessions of circular clarity earlier, but a lot of students used it. इतने सारे attendees ने use किया. I thought it'll be helpful to a lot of more people. So I did a post on LinkedIn that किसी को भी prompt चाहिए they can let me know. तो मैंने वो prompt बनाया था yesterday, मतलब day before yesterday. Use that prompt to create a report on a company called PC Jewelers. PC Jewelers, company into gold and gold jewelry and all. तो मैंने क्या किया, I just downloaded its अपना क्या बोलते हैं, opened its latest year's annual report in the notes to accounts में मैं गया हूँ and I'm just checking उसका aging. तो देखो एक ऐसा रिपोर्ट ट्रेड रिसीवेबल्स का रिपोर्ट बन के आता. ठीक है, अभी इसका एजिंग रिपोर्ट ऐसा दिखता है जो मैं अभी बात कर रहा था. रीड दिस रिपोर्ट. अमाउंट एंड आउटस्टैंडिंग फॉर फॉलोइंग पीरियड्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट. पेमेंट से के बाद कितने अमाउंट आउटस्टैंडिंग है. तो देखो क्या गंदा हालत है कंपनी में. अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल्स कंसिडर्ड गुड मोर देन 3 years. गाइस मोर देन 3 years से कितना अमाउंट है 1164. देखो सारे अमाउंट्स मोर देन 3 years वाले, मोर 2 to 3 years वाले. तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर फॉलोइंग पीरियड्स फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ पेमेंट. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यस, ये नॉन करंट है और ये करंट है. मोर देन 3 years वाला जस्ट सीधा अमाउंट. ऐसे कंपनीज में यू शुड बी कॉशन. अभी आपको लगता है गाइस मोर देन 3 years है तो पैसा मिलेगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. यू हैव टू डू एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ रिकवरी, तब जाके यू माइट गेट दिस. यस, तो उनका जो यू सी के जो टोटल रिसीवेबल्स है उसमें से हाउ मच पार्ट इज फॉर मोर देन 2 years, मोर देन 3 years. बहुत डिफिकल्ट है उसको रिकवर करना. तो क्या कर सकते हैं अभी हम उसको. सो इफ यू सी 350 करोड़ में से 349 करोड़ तो मोर देन 3 years वाला. इज दिस क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? सबको एग्जांपल मिल गया. विल नाउ डिस्कस in a similar fashion what is days payable outstanding, that is creditor days. वो भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं. yes, similar guys, अभी the concept will seem very simple because it's very similar to debtor days. creditor days क्या होता है? average number days the customer takes, the company takes to pay suppliers.
So how much time are we taking to pay our supplier is called creditor days. If the creditor days of a company is said to be 45, it means we pay our supplier within 45 days. Almost 45 days लगता है हमें to pay our supplier. Now obviously अगर ये ज्यादा होगा, higher conserves cash. If you pay your supplier late, आपके पास पैसा रहेगा, you can use it for anything that you want to do. Yes, too high may strain the supplier or signal stress. बहुत ज्यादा में नहीं होना चाहिए, but अगर थोड़ा ज्यादा होगा then your peers, so it means that you're in a very good position. When should you use this? Evaluate supplier terms, bargaining power and cash preservation strategy. Cash preservation strategy बहुत important है. Yes, आपको समझना है कि थोड़ा थोड़ा भी अगर आप बढ़ाते रहोगे creditor days, तो क्या होगा? You will have cash in your company for more number of days. It will be better for you. Rising DPO creates free financing and can drive a negative cash conversion cycle. We'll come to this when we'll discuss cash conversion cycle in a minute. Watch for supplier pushback. Yes, ये भी देखना पड़ेगा हमें. Align DPO with inventory terms to avoid stock out. Stock out मतलब ऐसा सिचुएशन wherein you don't have goods. कस्टमर आपको बोल रहा है कि ये मुझे दो, आपके पास है ही नहीं तो बेचोगे कैसे? तो वैसा सिचुएशन हो जाता है. I'll explain. Guys, होता क्या? If you just tell your supplier, no, I'll not pay you in 2 months, I'll pay you in 3 months, I'll pay you in 4 months. If you keep increasing that, ultimately what will happen? Okay, supplier will like, listen, bro, I'll give this to someone else. So you might lose out on a supplier. So you can't increase it too much that your relation with the supplier gets hampered. In that case, you won't be able to sell goods on time. So आपको क्या करना है? It should be high, but not that high that the supplier actually, find some other customer. Clear? That's it. Now days of inventory, days inventory outstanding, inventory days. Inventory days क्या होता है? कितने दिन? Okay, if inventory days is 50, it means it takes us 50 days to sell all our goods. So inventory कितने दिन बैठता है मेरे गोडाउन में before I sell them? 50 days. It takes me 50 days to sell. Obviously, again, this is lower the better. Again, guys, industry to industry change होता है. FMCG, it is fast moving consumer goods. So जल्दी बिकता है 15 to 45 days. Manufacturing around 60 to 120 days. Fashion electronics may vary widely. तो ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक है. इन्वेंट्री डेज आप सेम इंडस्ट्री में ही कंपेयर कर सकते हो. एक मेरा ना ओपिनियन है फॉर पीपल एनालाइजिंग डेटर, क्रेडिटर एंड इन्वेंट्री डेज. याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट ये तीन में से क्या होता है? इज इन्वेंट्री डेज. क्यों? अगर आपने इन्वेंट्री डेज कम कर दिया ना, दैट इज इन योर कंट्रोल. दैट इज कंप्लीटली इन योर कंट्रोल. अगर कोई कंपनी इज एबल टू लोअर इट्स इन्वेंट्री डेज, इट मीन्स द कंपनी इज एक्चुअली वर्किंग टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर. देखो, डेटर डेज एंड क्रेडिटर डेज ना तो आप कर सकते हो आगे जाके, पर इन्वेंट्री डेज कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है. देखो, डेटर डेज कस्टमर इज इन्वॉल्व इन द पिक्चर, क्रेडिटर डेज सप्लायर इज इन्वॉल्व. बट इन्वेंट्री डेज में क्या है? आपका कितना मेहनत है. इफ योर प्रोडक्ट इज अमेजिंग, इफ द डिमांड इज हाई इन द प्रोडक्ट, यू विल बी एबल टू सेल इट वेरी क्विकली. यू विल बी एबल टू सेल योर प्रोडक्ट्स वेरी क्विकली. सो टू टेक एफर्ट. क्या आप बहुत ज्यादा गुड्स ना बना दो. इफ यू मेक टू मच प्रोडक्शन, इट्स लाइंग इन योर वेयर हाउस, तो योर मनी इज ब्लॉक्ड इन इन्वेंट्री. यस, इफ यू प्रोड्यूस वेरी लेस, तो कस्टमर विल डिमांड, यू विल नॉट बी एबल टू गिव ऑन टाइम. तो ये आइडियल, तो बहुत कम कंपनीज है, वेरी लेस कंपनीज which have been able to crack this inventory days very well. Track stocking policy, demand supply balance, product freshness. ये सारी चीज you need to keep in mind. Again, guys, rising DIO with flat sales may imply overstocking or slowing demand. Sales उतना ही है, your revenue is उतना. The sales revenue growth is not high, but your days of inventory is increasing. मतलब आप बेच नहीं पा रहे हो, demand is less. तो डिमांड आपके प्रोडक्ट का स्लो हो गया. A lot of companies में you will find this. Okay, at least last 2-3 साल में ना FMCG companies were not doing very good. The revenue was not able to. अभी तो because of the GST rate cut, ये push के वजह से it is possible कि FMCG companies might pick up now. But couple of years back FMCG में the revenue had slowed down. So if the days of inventory is increasing, आप बेच नहीं पा रहे हो, revenue तो मतलब demand slow हो गया. So this is one good indicator to understand. Operating cycle and cash conversion cycle is something that we'll now discuss. So we'll now discuss what is operating cycle and what is cash
conversion cycle. Very simply speaking, operating cycle is days of inventory plus days of receivable. Sir, formula नहीं समझना. Okay. Conceptually speaking, days of inventory is कितना time लगता है for me to convert my product into cash. This is how quickly you can convert your product into cash. आज अगर मैंने आपको एक product दे दिया, let's say I don't have my watch over here. I usually take my watch as an example. Let's say I have given you a product. Let's say ये pen मैंने आपको दे दिया. I am giving this product to you right now. How quickly you can convert this product, this pen into cash? Pen to cash कितना time लगता है? Basically that is operating cycle. As simple as that. Sir, can you derive how you have come up with this? See, operating cycle is days of inventory plus days of receivable. Simple addition. Days of inventory मतलब कितना time लगता है for you to sell? I have this pen. मैं धक्का खा के I went to so many places. Finally, I got a customer who is ready to buy the pen. So it took me, let's say 20 days. मेरे को 20 days लगा. It took me 20 days to actually sell this to a customer. Okay, अभी मिल तो गया customer, but customer is saying, bro, I will pay you after 40 days. 40 दिन बाद मैं पैसा दूंगा. I'm like, ठीक है. तो अभी 40 days के बाद he is actually paying me money. So total कितना हो गया? 60 days. So operating cycle क्या होगा? It takes me 60 days. 2 महीना लगता है to convert this pen into cash. Understood? So अगर दो कंपनी है, there are two companies which are doing the same business, everything is same, but a company having a lower operating cycle will be able to do very well. क्यों ऐसा? क्योंकि वो साइकिल जल्दी घुमा रहा है ना. If he is able to convert product into cash in let's say 45 days, 1.5 महीने में कर पा रहा है, तो after 1.5 months he'll again do the same cycle. So he'll be able to do more cycles in 1 year. He'll earn more money. Understood what I'm saying? So operating cycle भी बहुत बड़ा गेम है. आपको लगेगा अरे ये कंपनी का तो मार्जिन बहुत हाई है, अच्छा है कंपनी, दिस कंपनी का इज चार्जिंग लेस मार्जिन, बट इफ द अदर कंपनी इज चार्जिंग लेस मार्जिन, वो साइकिल ज्यादा कर रहा है ना, अल्टीमेटली विल अर्न मोर. सो मार्जिन नहीं देखना होता, आपको साइकिल भी देखना. लोअर द साइकिल बेटर इट इज ना. यू अंडरस्टूड हाउ क्विकली यू आर कन्वर्टिंग योर प्रोडक्ट इनटू कैश इज ऑपरेटिंग साइकिल. मूविंग वन स्टेप अहेड, this is days of inventory plus days of receivable minus days of payable. This portion gets added over here. So sir, what is cash conversion cycle? How long is your money getting blocked in the business? How long is your money getting blocked in the business? Simple. Sir, can you again derive this? Explain this in detail. Sure. So what happens over here is, yes, again same, ye pen. Yes, I have bought this pen from someone. I purchased this pen, let's say from a shop, or maybe let's say from the pen manufacturer. From a pen manufacturer, I bought this pen. Okay. Now this pen manufacturer को मैंने बोला, listen bro, I don't have money right now, but I will pay you after 30 days. तो मैंने उसको बोला, I'll pay you after 30 days. 30 दिन बाद मैं पैसा दूंगा. Okay. How long is it taking for me to sell the product? Let's say मेरे को प्रोडक्ट बेचने में लग रहा है 60 days. And customer said, I will pay you money in 15 days. I'm like, perfect. So now if you just add and subtract this, क्या आ जाएगा? Guys, someone? 45 days. So it takes me 45 days. So 45 days के लिए my money is getting blocked in the business. 45 days के लिए my money is getting blocked. I'll explain. See, this is day 0. Yeah, day 0. बराबर आ जा. Now I have nothing today. I am buying the product. I purchased the pen today. I purchased the pen, but I don't have money. I told my supplier I pay you after 30 days. So on the 30th day, I pay money to supplier. Now after 30 days, मतलब 60th day पे, okay, I sell the pen. Sales हो गया. Yes, and on 75th day, within the next 15 days, okay, I receive money from customer. So now you see what I'm saying. It takes me 30 days to pay my supplier. Yes, जैसे ही pay कर दिया, okay, it takes me actually 60 days, okay, to sell, and it takes me 15 days to receive money from the customer. So I can prove now, okay, I told you answer is 45.
बराबर है 45 days के लिए my money is getting blocked in the business. So you see यहाँ पे cash outflow हो गया, यहाँ पे cash inflow हो गया. You check, this is nothing but 45 days. Correct? So for how long is your money getting blocked in the business? That is cash conversion cycle. And both are lower the better. जितना कम उतना अच्छा है, जितना कम उतना अच्छा. Now, when I teach CFA, I've also mentioned it to a couple of students. Okay, and I keep going outside the book and discuss. So I had just once told a bunch of students that can cash conversion cycle be negative? ये negative हो सकते हैं क्या guys? They were just discussing this, and a student actually kept writing the examples that I used to give. This was the first question that he was asked when he had gone for an interview after his level 1. So there's a student he interviewed in a very big finance firm for an equity research analyst role, and this was the first question asked to him. Okay, can cash conversion cycle be negative? If yes, give us 2 examples. So yes, cash conversion cycle can be negative. Number of days are negative, yes. उसका मीनिंग क्या हो जाता है? Your money is not getting blocked, rather you are doing business सप्लायर के पैसे पे. सप्लायर के पैसे पे आप धंधा कर रहे हो. ठीक है, सप्लायर इज गिविंग यू इतना बड़ा क्रेडिट, एंड दिस हैपेंस इन कंपनीज लाइक नेस्ले, दिस हैपेंस इन अ लॉट ऑफ कंपनीज. बहुत सारे कंपनीज में ये होता है, जनरली एफएमसीजी कंपनीज एंड ऑल, जहां पे द डेटर डेज इज वेरी लेस. कस्टमर पेज यू इमीडिएटली, बट यू पे द सप्लायर आफ्टर 2 months, 3 months, 4 months. Yes, exactly. A lot of people are giving good examples in the chat box. Amazing, guys. Perfect. So these things you have to understand. What I'll do is I'll keep the whole table on the screen, and I'm hoping people can zoom in and read it. You can just zoom in and read. Yeah. मैं क्या सोच रहा था, एक मेरे को आइडिया आया. See, I had structured the whole session in such a way कि we'll discuss all the ratios and then we'll do few case studies. पर एक काम करता ना, सारे ratios together will become very tormenting. Let's do one case study at a time. So today we just completed working capital efficiency ratios, even though we went slow, doesn't matter. Let's take one case study which is related to this. Are you guys ready? Should we discuss one case study and then wrap up? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Guys, for people who don't know, generally in CFA, so I might have discussed this, but hear me out very carefully. Very, very interesting case. And I'll tell you why. Because exactly what we have studied in today's session. Okay. If you just know what we have studied today, still you would have made sure you don't lose huge amount of money. Okay. And avoid investing in a company like Cox Kings, wherein a lot of retail shareholders lost so much money. Okay. So there's a company called Cox Kings India Limited. Cox Kings India Limited. Okay. एक्चुअली अगर इसका मैं हिस्ट्री बताऊं ना, तो देयर इज अ कंपनी कॉल्ड कॉक्स एंड किंग्स यूएस में. वो 1758 में बन गया था, बट इंडियन कंपनी एक्चुअली फॉर्म्ड मेनी इयर्स लेटर इन 1939. ओके. इट्स अ फुल सर्विस टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर. कंपनी है इज अ फुल सर्विस टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर. ठीक है, ये कंपनी क्या करता है? टूर्स एंड ट्रैवल. तो अभी इफ आई टेक, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था जहां पे इट्स रिटन, if you take the average data from 2009 to 2018, so I'm not even taking 1 year. If I take just 1 year data, so that might be a one-off year, कुछ issue होगा. Take an average. You tell me. Okay, I'll take Cox Kings India and 2 other competitors, so it becomes a fair comparison. Thomas Cook and Make My Trip. Okay, and let's discuss their debtor days. Debtor days, just to recap, guys, debtor days क्या था? How many days it takes a customer to pay us money on an average. कस्टमर कितना टाइम में पैसा देता. ठीक है. कॉक्स एंड किंग्स इंडिया के कस्टमर कितने दिन में पैसे देते पता? द रिपोर्ट सेड 176 days. सर पक्का इट इज अनयूजुअल. थॉमस कुक, इट्स डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, 37 days. Make My Trip, 25 days. Now, when you compare it with its peer company, you'll understand. 176 कहाँ पे, 37 कहाँ पे? 176 almost 6 months, 37 almost 1 month. इतना ज्यादा debtor days? Guys, समझो क्या हो रहा है. You understand what happened. So let's say you are analyzing this company Cox Kings India. Okay. You know you have set this session, so now you know debtor days आप check कर सकते हो. You check debtor days. आपको समझा? अभी आप common sense लगाओ guys.
टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर। आज मैं गया, मैं बोल रहा हूँ ब्रो मेरे को ना स्विट्जरलैंड घूमने जाना है। ऑक्सन किंग्स गाइस आर लाइक ओके टेक द पैकेज, मैं घूम के आऊंगा, उसके 6 महीने बाद आई डू द मनी। डू यू थिंक दिस इज लॉजिकल? डू यू थिंक अ टूर एंड ट्रैवल कंपनी का डेटर डे शुड बी 6 months? No, sir. कुछ तो गड़बड़ है ना। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट वी कुड हैव रियलाइज्ड ओनली यूजिंग द कॉन्सेप्ट दैट वी डिस्कस्ड टुडे कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ है। सेकंड, इफ यू सी रेवेन्यू फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज was 92% of total standalone revenue। मतलब गाइस क्या, इफ यू चेक ये कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 18 का रिपोर्ट चेक करो, चेक द फाइनेंशियल ईयर 18 रिपोर्ट्स ऑफ कॉक्स एंड किंग्स इंडिया। उनका जो टोटल स्टैंड अलोन फाइनेंशियल में टोटल रेवेन्यू है उसका 92% इज कमिंग फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज। एक्चुअल में कोई रेवेन्यू नहीं है, आपके सिस्टर कंसर्न होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी से आपको पैसा आ रहा है। यू आर अ टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर राइट, तो कस्टमर से पैसा आना चाहिए। व्हाई इज द मेजोरिटी 92% मनी कमिंग फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज? अनदर रेड फ्लैग गाइस, दूसरा रेड फ्लैग। सो व्हेन यू आर सिटिंग टू एनालाइज कंपनी, ये सब हमें समझना है, ये सब हमें रेड फ्लैग्स पकड़ना है, ठीक है गाइस? इज दिस क्लियर? व्हाट एल्स उन्होंने ना कमर्शियल पेपर पे डिफॉल्ट किया, कमर्शियल पेपर पे भी डिफॉल्ट किया। रादर मैं सीक्वेंस पे जाता हूं, दिस हैपेंड अर्लियर, यस। Next thing happened in financial year 18. I will take an example of financial year 19. In financial year 19, okay guys, non-related party, मतलब related party से नहीं, non-related party से revenue था 280 करोड़ and debtors थे, guess करो कितना होगा? 1450 करोड़। मतलब मैं जो 4-5 साल से इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत मेरे में नॉलेज है, आई हैव नेवर कम अक्रॉस अ कंपनी ओके जिसका डेटर्स इज 5 times द रेवेन्यू। पूरे साल में उन्होंने रेवेन्यू कितना किया? 280 करोड़, और कस्टमर से पैसा कितना लेने का बाकी है? 1450 करोड़। तो रेवेन्यू से 5 times इज द डेटर्स। ये मतलब देख के चक्कर आ जाने चाहिए, ये क्या चल रहा है, ये मस्ती चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। You understand what I'm saying? Yes? तो these point we have to understand, ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब पूरे साल का रेवेन्यू है, उससे 5 टाइम ज्यादा तो कस्टमर से पैसा कलेक्ट करना है। सो कितने साल का रेवेन्यू से यू आर, मतलब so many years का रेवेन्यू is just shown, but you have actually not been able to collect money, so the debtors is piling up. Yes? Now someone in the chat box had asked, sir, what is bogus revenue now? You tell me ना guys, if the debtors का amount keep increasing, debtors अगर बढ़ता जाता है year on year, but money wasn't collected, money not collected, so don't you think this is sign of bogus sales? Can be bogus sales, मतलब फेक सेल्स होगा ना, क्योंकि अगर एक्चुअल सेल्स होगा तो कस्टमर वुड हैव पेड मनी। कस्टमर पे ही नहीं कर रहा है, या तो कस्टमर भाग गया, या तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि कोई सेल्स ही नहीं था, आपने ऐसे ही फेक सेल्स रिकॉर्ड कर दिया। रामू गोइंग टू श्रीलंका, शामू सिंगापुर पैकेज, यस कृष्णा भाई मलेशिया पैकेज, ऐसे ही रैंडम नाम डाल के ओके पैकेज बना के रख दिया होगा। पॉसिबल, आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट अक्यूजिंग द कंपनी, ऑल एग्जांपल्स गाइस, बट आई होप यू अंडरस्टूड दिस, करेक्ट? एंड द लास्ट स्ट्रॉ, ये चौथा पॉइंट हुआ ना गाइस, उसके बाद खत्म। फिर शेयर प्राइस ने एसएल पे राइड होता है ना, वैसा राइड मार दिया, ठीक है। दे डिफॉल्टेड ऑन अ कमर्शियल पेपर, ओके। कमर्शियल पेपर पीपल अंडरस्टैंड, कंपनीज ना कमर्शियल पेपर इश्यू करते हैं, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, उनके वर्किंग कैपिटल के लिए जो फंडिंग चाहिए उसके लिए। सो इधर यू कैन टेक अ लोन फ्रॉम अ बैंक, बट इफ यू आर अ फेमस कंपनी, जैसे कॉक्स एंड किंग्स इंडिया फेमस कंपनी, दे आर फेमस, सो पीपल वुड बाय कमर्शियल पेपर्स फ्रॉम देम एंड गिव देम लोन। सो company can issue commercial papers, yes, and they can they have to then repay within a year। छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स ही होते हैं, ठीक है। तो कॉक्स एंड किंग्स इंडिया ना, ओके, एंड ये लोग दे हैड टू पे 20 करोड़ दिए थे कमर्शियल पेपर्स के नाम पर। कॉक्स एंड किंग्स इंडिया कुड रीपे ओनली 50 करोड़, 50 करोड़ ही रीपे कर पाए। कॉक्स एंड किंग्स इंडिया को 200 करोड़ रुपए पे करने थे, 200 करोड़ ऑन द अकाउंट ऑफ कमर्शियल पेपर, उन्होंने सिर्फ 50 करोड़ पे किए, तो 150 करोड़ का डिफॉल्ट है। अभी
You are not shocked, but I'll tell you what was the shocking thing. Immediately इसके पहले थोड़े महीनों में फाइनेंशियल 19 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन देयर बैलेंस शीट दे हैड शोन अ कैश बैलेंस ऑफ 1830 करोड़. अगर आप दिखा रहे हो कि आपके फाइनेंशियल्स में 1830 करोड़ का 1830 करोड़ का कैश पड़ा है, तो 150 करोड़ पे नहीं कर सकते क्या? What does it mean? It means कैश भी फेक था. Don't you feel ये कैश भी फेक ही होगा? Yes? Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. So these are the 4 things that happened sequentially in the same timeline. पहले you could understand debtor days से, तभी मैं तो निकल जाऊं भाई. Second, you understood revenue from related parties 92%. More though fishy. Third, just by plain looking at revenue and debtors का number, you should have understood के impossible है, ऐसा कुछ कंपनी हो ही नहीं सकता. Fourth, कमर्शियल पेपर पे डिफॉल्ट के इंस्टेड ऑफ कैश अपीयरिंग ऑन द बैलेंस शीट. अभी खत्म. ठीक है. तो ऐसे केस स्टडीज अगर हम पढ़ेंगे एंड वी रिलेटेड टू व्हाट वी आर स्टडीइंग, इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस टू एनालाइज द कंपनीज एज वेल. ठीक है. थैंक यू यार, थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग टू दिस सेशन. आई होप यू गाइस हैड फन एंड होपिंग टू सी ऑल ऑफ यू नेक्स्ट सैटरडे. यस. Thank you, sir. Thanks a lot guys. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thanks a lot guys. Thank you, sir.